बेटा जी हुण असीं करांगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिहड़े कि एक नंबर दे हैगे ने। साडा पहला क्वेश्चन है विच टू वर्ड कंबाइन टू फॉर्म बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है व्हाट आर 3 टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज जैन। नेक्स्ट है व्हाट आर द सबस्टेंस दैट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। व्हाट इज प्लांट आर वर्शिप्ड इन India? What are the called as producer? What is mean by herbivore? Next है what is mean by mutualism? What is mean by mimicry? और name give the name of 4 Indo-parasitic or organism. What is mean by extinction? Next है what is mean by endangered species? Next है which are the vulnerable species? What is mean by rare species? Next है what is mean by wildlife sanctuaries? Name the 300 animal species in India. Next है give the name of any 2 biosphere reserve in India. Next है what is mean by carrying capacity? Next है what is mean by environmental ethic? Next है what is biological diversity 2002 act concerned with? Next है what are the 3 aspects of evaluation of environment impact? Next है what are the fundamental element of environmental? Next है what is main object of environmental management? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इको मार्क स्कीम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इको मार्क लोगो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है स्टे टू नेम्स ऑफ प्रोग्राम एसोसिएट विद द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट्री और प्राइमरी नीड ऑफ मैन। सॉरी बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर द गिफ्ट दैट मैन हैज़ रिसीव्ड बाय नेचर ऑन द अर्थ। व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन और व्हाट इज मीन बाय फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऑन द व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है give a few example of fossil fuel और who coined the term biodiversity. Next है what is red data book? What is ultimate source of energy on the earth? Next है how many biosphere reserve are found in India? Next है what is environmental management? Next है does development affect environment? How? Next है what does the article 48A state? Next है write the objective biomedical waste management and handling rules 2000. Next है when was forest conservation act adopted? Next है when was environmental protection act adopted? Next है what are ambient status? Next है list any 3 basic need of man. What is the principle of 3Rs? Next है what is food chain? Next है what is food web? Next है name 2 most biodiversity rich region of India. Next है name any vulnerable Indian species. Next है name any rare Indian species. Next है name any endangered species. Next है what is ISO 14000 certification और नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर्टिकल 51A इन इंडिया। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज द बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल्ड।
Next है what are the substances that act as a source of biodiversity to the industrialist? How many species of plants are used to prepare medicines? Next है what is mean by communalism? और next है state any four harmful interactions. Next है which two place out of 25 high diversity region in the world are found in India. Next है how many wildlife sanctuaries are there in India. Next है how many national park are there in India. Next है what is mean by hot spot. Next है give the name of any two biosphere reserve in India. What impact next है what impact does the building up of dam has on the environmental. Next है what are aspect of environmental. Next है when did the Environmental Protection Act come into the force. Next है when was the Department of Environmental established in India. Next है what is mean by ecological diversity. Next है what is project tiger. तो बेटा अगे फुल फॉर्म लिखनी है ये जेडे फुल फॉर्म है इन्हों अच्छी तरह कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जेडे ने इन्हों के बेस ही आए ने ठीक है बेटा अच्छी तरह सारियां कर लेना मैं इस करके नहीं करवाया क्योंकि अगे सानू क्वेश्चन पढ़ना पैना ठीक है बेटा जिस तरह वैन वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. नेक्स्ट गिव द फुल फॉर्म ऑफ WWF. राइट एनी टू इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल कंसर्न. नेक्स्ट है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्शन पैटर्न. नेक्स्ट है what are the basic need of man. Give the full form of HDI. Next है what is mean by standard of living. Next है who did present the concept of sustainable development. Next है what are those social changes that India has to face. challenge है बेटा. What are those social challenges that India has to face. Next है when and where was the Earth Summit held. Next है what are the different approaches for sustainable development. What is the full form of UNEP. Next है when and where was the World Summit for sustainable development held. Next है what do you mean by urbanization. Next है what who is founder of green revolution. Next है what do you mean by manures. Next है name any diseases found in sugar cane. Next है write name of two mixed fertilizer. What is mean by irrigation. Next है name the type of manures. Next है what is blight diseases. Next है what is mean by mixed cropping. Next है full form लिखनी है IPM दी. Next है give the example of annual crop rotation. Next है what is mean by crop rotation. Next है what is mean by food processing. Next आएगा साडा which chemical used to preserve food. Next है define biofertilizer. Next है what do you mean by population. Next है what is demography. Next है name any two chemical method to prevent population growth. Next है what is mean by population explosion. Next है what are two type of population. Next है give the full form of CFC. Next है expand CEE. Next है what is air pollution.
सॉरी एक रह गया, नेम द अल्टरनेटिव फ्यूल आर दैट आर यूज इंस्टीड ऑफ द प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल। फिर एयर पोल्यूशन करना है। इस तो बाद साडा आएगा वट इज पोल्यूशन, गिव एनी टू रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन। इस तो बाद आ जाएगा वट इज नॉइस पोल्यूशन, वट इज सॉइल पोल्यूशन, और वट इज द 3R प्रिंसिपल, और वट इज वर्मी कंपोस्टिंग, वट आर सॉरी व्हेन वाज वन महोत्सव स्टार्टेड, वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड। नेक्स्ट है गिव द फुल फॉर्म ऑफ PCRI। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है व्हेन वाज द गंगा एक्ट प्लान स्टार्टेड। नेक्स्ट है व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज कमर्शियल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है नेम एनी टू बायोफ्यूल। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 3 मूवमेंट स्टार्टेड बाय पर्सन ऑफ विलेज फॉर सेविंग ट्री। नेक्स्ट है एक्सप्लेन CFL। इस करके बेटा मैं क्या ही कि फुल फॉर्म हमेशा याद रखना इन्हां दी की है। काफ़ी क्वेश्चन साडे इस तरह के आए ने। नेम सम माइक्रो कंट्रीज नीडिड बाय प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, डिफाइन विल्ट। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ टू फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड क्रॉप ग्रो इन इंडिया। नेक्स्ट है नेम थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल। नेम द थिंग्स विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रिपेयर। नेम एनी 4 इंडस्ट्री प्रोसेस विच जनरेट सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट है 41 ते आ जाएगा 141 ते हु क्रिएट रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। नेक्स्ट है हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल एवरी डे। नेक्स्ट है हु लीड द चिपकू आंदोलन। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय बर्थ रेट। फिर व्हाट इज मीन बाय डेथ रेट। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्लांट यूज इन प्रिपेयरिंग द ग्रीन मैच्योर। नेक्स्ट है व्हाट इज मोटो ऑफ लीडर ऑफ चिपकू आंदोलन। नेक्स्ट है डिफाइन वेस्ट, और व्हाट इज GDP। ठीक है बेटा। नैक्सट साढ़े 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिलहाल तुसीं उन्हां नूं कर लो तो नैक्सट वीडियो च मिलते हैं। टेक केयर।